जी, अस्सलाम वालेकुम everyone. Welcome back to another episode of Founder Stories. मैं आपकी host Sabah Said, and today we have with us Mr. Mohammed Ammar Elahi, the founder of Greatheart Designs. So let's find out about his business journey. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। क्या हाल है कैसे हैं आप? आप? Alhamdulillah, ठीक ठाक. जी जैसे बिल्कुल। सबसे पहले तो let's begin by talking a little bit about your business, your own background. आप कुछ बताएं हमारी audience को कि आपने education कहाँ से हासिल की, उसके बाद के experiences कैसे रहे आपके? श्योर। बेसिकली मेरी एजुकेशन मतलब बिल्कुल स्कूलिंग जो मेरी स्टार्टिंग थी वो तो सियालकोट से, बिकॉज मतलब जहाँ आई वाज बोर्न इन सियालकोट, सो स्कूलिंग वगैरह मेरी सारी सियालकोट से है। एंड देन आई वेंट फॉर माय बैचलर्स टू लाहौर। मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया लेदर फुटवेयर और एक्सेसरीज में, PIFT, Pakistan Institute of Fashion and Design. And then when I graduated in 2015, and then I came back to Sialkot. और मुझे काफी ज्यादा मतलब एक huge difference feel हुआ because my father is a businessman and मतलब हमारा थोड़ा मतलब I'm connected with the industry, मतलब not on that level but somehow I am. So मुझे थोड़ा सा काफी ज्यादा बल्कि डिफरेंस फील हुआ व्हेन आई केम बैक के यहाँ पे कुछ भी एक जो पढ़ के आते हो आप कुछ सीख के आते हो यहाँ से बाहर निकल के, तो व्हेन यू कम बैक हियर तो सियालकोट वैसा था ही नहीं। मतलब यहाँ पे पीपल यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस टू क्रिएट स्टफ। आई मीन जैसे कि आपको भी पता होगा कि it was a smaller industrial hub, but it was like Karachi and Faisalabad are bigger. But Sialkot somehow was known for the sporting goods and surgical instruments and everything like that. But कुछ सालों में 10-15 सालों में that legacy was lost totally. I mean, I felt that difference as probably मतलब आप कह सकते हैं कि सियालकोट में रहते हुए as a third person. I felt that. My journey from my studies to this point has been ups and downs. Obviously, it's a part of every journey, but drastic change in the environment because if you have some knowledge of product making or anything like that, but you do not have any opportunities back here in Sialkot, I felt that, and that was a major setback for me at that time. And then I started struggling, and then I started doing something, thinking कि मतलब इसका क्या what can be the way around, मतलब हम इसको किस तरह overtake कर सकते हैं, overcome कर सकते हैं. और then I found कि यहाँ पे somehow we have lost that legacy, but people are still working मतलब on a smaller level. आप उनको मेकर्स कह सकते हैं, आप उनको लेबर क्लास कह सकते हैं, बट दे हैव स्टार्टेड देयर ओन सेटअप्स. मतलब एक जो एक्सपोर्ट लेवल की सिटी थी, दैट हैज बीन कम डाउन टू अ मेकर लेवल सिटी. बट चलो, इट्स ओके. आई मीन वी कैन नॉट जस्ट सिट बैक एंड से के मतलब कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है. सो दैट वाज द थॉट बिहाइंड Greatheart Designs. और the mission was के to bring back the lost originality of the city. मतलब ये क्या था और ये क्या बन गया और ये क्या हो सकता था if it was driven into the right direction. So मतलब I've had help, मतलब lots of help from outside as well, all over Pakistan. मतलब I've been in touch with people, I've been in touch with different people connected to raw materials and मतलब sourcing आप कह सकते हैं. But and they've been a great help. मतलब obviously you can't do anything alone, और ये भी जरूरी नहीं है कि your team has to be in one place in front of you every time so you can work. ऐसा भी नहीं है. ये भी possible है कि you can be alone in a certain area, in a certain space, but you can still be connected with people. Like जो आजकल हो रहा है, especially what we went through during the times of Corona, right, is the perfect and best example of how you can be connected and still be with no one. So right. ये सारे आपको जो टेक्टिक्स हैं ऑनलाइन के, इंटरनेट के, मतलब मेरे से बेहतर शायद लोगों को आते हो, बट मुझे जितना नॉलेज था
जितना knowledge है, सही. I have been putting it to test. बाकी God has been great as well. Um, Disappointments and everything was a part of the journey, is still part of the journey, and ups and downs as well. Let's hope for the best. मतलब, this is my target. We'll achieve something out of it. इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल. That's Voilà. wonderful. So ये बताएं कि Greatheart Designs, what exactly do you do? Tell us about how workday looks like for you basically. What does a day at your workplace look like? What do you do? किस तरह आपका दिन होता है कि क्या आप लोग करते हैं exactly? Basically, from my end, it's like connecting with people who are outside in the market. My day, it's more like you have to it's mostly on the phone. I'm mostly on the phone. I'm mostly connected with people, and I'm searching for newer products, newer materials which are available in the Pakistan. I mean, in the local market. I mean, we can, but we do not currently want to go for the imported material and stuff, because we want to create something which we can originally make in Pakistan. So वो छोटी चीज भी होगी ना, मतलब एक कोई नॉर्मल सी चीज है, एक रैंडम सी चीज है, बट आपने उसका सारा मटेरियल, उसकी सारी मेकिंग, उसकी सारी मेहनत, उसका सारा डिजाइन यहाँ पे किया है. दैट इज मतलब Greatheart Designs का जो ओरिजिनल मिशन है, मोटिव है, वो ये है. सो माय डे स्टार्ट्स विद लाइक मतलब काम कहाँ तक पहुंचा है, कितना हो गया है, कितना रह गया है, और मेरी वर्किंग जो है मेरे एंड पे वो मोस्टली होती है डिजाइन की, मटेरियल्स फाइंड करने की, और मतलब उनको फिर प्रोटोटाइप्स में कन्वर्ट करना. उनको मैं मतलब आई डू इट बाय माई सेल्फ. I make the first samples of everything, because when I was studying there in PIFT, we basically learned the art of making, मतलब hand making products. What I can do is I can basically make make a handmade shoe, a handmade bag, any leather product. आप मतलब एक normal सा और I make the product myself. मैं उसको सारा टेस्ट वगैरह करता हूँ कि मतलब वो प्रैक्टिकल है, कोई इसमें इस तरह का मसला तो नहीं है. ये काफी ज्यादा चीजें डिजाइन में कुछ होड़ लग रही होती हैं, बट व्हेन इट्स इन फ्रंट ऑफ यू एन एक्चुअल प्रोडक्ट, so it's totally different. So that's how it starts with. Okay, so ये सब processes आपने जो भी बताए हैं, इसके पीछे obviously there must be a team of people जो कि आपके साथ help कर रही है और हर चीज को possible कर रही है, right? So ये बताएं कि team building processes के हवाले से कुछ बताएं कि आप किस तरह से उनको motivate करते हैं. First of all, my father, he has been a great help to me. मतलब in all this, he was there for me. हालांकि he's in I am in the running business. I mean, he's in the running business from last 40 years, mashallah. And this journey, I mean, this separate journey, he made me, I mean, he motivated me to studies complete karo, and then do something which you can learn, something which you can do, which you can make with hands. So first of all, though, I mean, the bigger help, the greater help is from his side. Other than that, जब आप काम में आ जाते हो, जब आप मतलब कोई भी चीज है, वो आपका एक स्टडीज का लेवल है, वो आपका एक जॉब का लेवल है, इंटर्नशिप का लेवल है, देन इट्स योर वर्क लेवल, जो भी आपके माइंड सेट है, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू एवरीथिंग, इंटर्नशिप्स, जॉब्स, और मतलब एवरी स्टेज, बिकॉज आई वांटेड टू लर्न. सो आई मतलब एवरीथिंग कम्स इन फ्रंट ऑफ यू खुद ही से. मतलब you start finding the right people. That's how you know कि you're on the right path. मतलब अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, तो you are satisfied, doors are opening for you, positive doors, मतलब the ones that are making you happy. जब आप काम करके घर आओ तो आप खुश हो, तो that is a positive response from the universe to you कि you're doing something right. ठीक है, आपको अच्छे लोग मिले, आपको ऐसे लोग मिले जिनके साथ आप बैठ के खुश हो जाओ, तो ऐसे ही आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे सही पाथ पे हो. तो when I started this journey, I started
matlab, I found people, matlab, they connected with me, I connected with them. Some of them tried to connect with me by themselves, and then when they do, or motivation comes automatically. Matlab, if they're doing something right, जो आपका basic question था, if they're doing something right, if they're doing something good, obviously you'll be asking them for more, and Right. you'll be doing anything which you can, which is in basically in my hands, to make it up to them. And the main part is, everything matlab, is a part of the journey, learning, products, money, but the um, the understanding वाला पार्ट जो है ना, जो कि उन्होंने आपको अंडरस्टैंड करना है, आपकी टीम ने, और आपने उनको अंडरस्टैंड करना है, सो दैट इज बेसिकली वेयर everything happens. If you don't understand them, if they don't understand you, you won't be getting nowhere. So we just said, we just talk random, we just talk normal, we just talk about everything, about whatever is happening. Right. मतलब हमें तो नहीं पता, but we can just assume like महीने बाद क्या होएगा, 2 महीने बाद क्या होएगा, प्रोडक्ट मार्केट कहाँ जा रही है, दुनिया की मार्केट कहाँ जा रही है. मतलब whatever we do, even if we stay in Pakistan, even if we say we are making products in Pakistan, we are somehow connected with the world. सही. I mean, everybody is. So, जो भी सिचुएशन ये कोरोना की वजह से बनी, so सब कुछ का इम्पैक्ट जिस तरह सब जगहों पे है, उसी तरह पाकिस्तान पे भी है. तो हम डिस्कस करते हैं चीजों को, मतलब जितनी हमें समझ आती है, जितना हम कर सकते हैं, जितना हम बच सकते हैं, जो एक अनएक्सपेक्टेड टर्न आना है, वी ट्राई टू अवॉइड दैट. बट जो होना होता है, बट वो तो ऑब्वियसली दैट इज रिटन, या दैट इज सपोज टू हैपन. सो you cannot ignore that. But the best part, I would say, if you ask me, what motivates them, what motivates me for this thing, for this project, is the understanding. It is the understanding. It's the most important aspect. I mean, बिल्कुल. I would give 10 out of 10 to just this aspect. Everything comes Right. under this. बाकी सब कुछ बाद में है, but पहले you have to understand बिल्कुल. Everything is what dependent on this sort of क्या understanding. understanding Yeah, employees के साथ आपस में communication कैसे. exactly. बिल्कुल सही. So before moving on to the next question, we are going to take a short break. जी, welcome back everybody. And so my next question to you would be कि आपने जैसे बात की शुरू में आपके इनिशियल फेजेस बिजनेस के, आपने किस तरह स्टार्ट किया, तो ये बताएं कि कोई चैलेंजेस फेस किए यूजुअली जब लोग स्टार्ट कर रहे होते हैं कोई बिजनेस, तो फाइनेंशियल टर्म्स में या किसी और एस्पेक्ट में, दे यूजुअली जैसे फॉर एग्जांपल फैमिली की तरफ से आपको मोटिवेशन नहीं मिलती, इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस की और फिर उसको कैसे ओवरकम किया आपने? Yes, I did. Just like you said, normally everybody goes through it. So I did financially be, और उससे ज्यादा मुझे जो मतलब जो डिफरेंस मैंने फील किया वो ये था कि I was not getting that level of product. I was not getting that level of quality which I wanted, because मैं आपको बताता हूँ कि I started this in 2015 when I graduated. So I came back, मतलब after few months, so मैंने सोचा कि कुछ करना चाहिए, तो I started this. But then I was a little disappointed कि यहाँ पे जो materials थे या product की quality थी और सब कुछ था, I had to face that. मतलब मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि even if financially you are good, even if you have the money to invest, बिल्कुल. even if you have the brains to invest, जब तक आपकी सराउंडिंग में वो चीजें नहीं है ना, आपके पास मटेरियल नहीं है,
क्वालिटी नहीं है, तब तक you cannot go Do it. anywhere. बिल्कुल. So yes, so mostly what people are doing here कि obviously सबका अपना setup है, सबका मतलब they are working on their own setups. मेरा मतलब हमारा भी अपना setup है. We have been making cricket balls since Okay. when I was born. Since last 30 years, my father has been making handmade cricket balls. So Right. मतलब वो एक ऐसी चीज है जो हम अंदर बनाते हैं, जो हमारे सामने बनती है सारा. और मुझे पता है उसका लेदर कहाँ से आता है, मुझे पता है उसका थ्रेड कहाँ से आता है, मुझे पता है उसको स्टोर कहाँ पे करना है, मुझे पता है उसकी जो नीडल है जिससे उसने सिलना है वो कहाँ पे पड़ी हुई है, और उसका स्टॉक कहाँ पे है ऑफिस में. और मुझे ये भी पता है कि किस बंदे ने कौन सा काम करना है, कौन सा स्ट्रेच करना है. तो दैट लेवल मुझे वहां तक पहुंचना है, और इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ विल गेट देयर. सो उस टाइम से पहले वाज दिस स्टेप कि मतलब आउटसोर्सिंग के अंदर अंदर व्हाट आई कैन अचीव. So because this is the maximum I can do right now because of the situation, because of whatever the मतलब जितनी मुझे permission है from the, not from anyone, from any person or something like that, but from you know the environment, from the universe, जितना मुझे एक चीज allow है, मैं उसके अंदर रह के जो कर सकता हूँ वो ये है. And I want to make the best out of it. So then I went for my studies. I did MSc after completing a bachelor's from Milan. और फिर वहां से मैं तकरीबन 1-1.5 साल बाद आया, और फिर we had to face that corona. और 2019, 20, 21, 22 have been like मतलब काफी ज्यादा अपसेट इन उस तरह का, मतलब नॉट क्वाइट प्रोडक्टिव. तो उसके बीच में आई वाज स्टिल वर्किंग, वी वर स्टिल वर्किंग. हम ढूंढ रहे थे, मटेरियल्स ढूंढ रहे थे, हम अच्छे वर्कर्स और ढूंढ रहे थे, बाय लेबर. जो I was telling you कि मैं स्टडीज के लिए गया था, एंड देन आई केम बैक, और फिर आगे भी had to face corona, and then we were still working in that process के मतलब वो अच्छे प्रोडक्ट, अच्छी लेबर, हम और अच्छी चीज, क्वालिटी की चीज किस तरह बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं. तो फिर ड्यूरिंग दैट टाइम आई स्टार्टेड दिस Phantom Republic. I think in August 2021. Right. I started this as a brand. Well, the company or the back end process is the same. It's the Greatheart Designs. The every working since 2015 till now. वो मतलब जिस तरह हम चल रहे थे, जो टीम थी, जो लोग थे, जो कनेक्टेड पीपल थे, वो दे स्टिल देयर. So Phantom was just an addition, just a brand which I wanted to introduce into Pakistan, but with quality handmade products. Not just कि मतलब कोई भी random product आप देखो. मतलब I'm not saying कि you should not do that. You should do anything which you want. I mean, whatever you feel like कि मुझे ये करना है, आप करो. मतलब that's up to you. We're talking about Greatheart Designs and Phantom Republic. So I'm just telling you, okay, what was the thoughts behind it, and क्या एक mission था, क्या एक originality का वो था, message था which we wanted to deliver to people. Okay, we can make something good. We can make something different here. You do not have to go outside. You do not have to go and live somewhere else to prove that you can do something. Right. Well, if you want, if you're willing, so doors will open, and doors did open. So Alhamdulillah. I cannot say no to that. I cannot say that. मतलब वो नाशुक्री वाली और वो इस तरह सारा सिनेरियो और सारा वो एस्पेक्ट होगा. बट ऑब्वियसली टाइम लगता है, चीजों में लगता है. आप कहीं भी हो, मतलब आपका दूसरी तरह किसी तरह टाइम लग सकता है, बट ये जरूरी नहीं है कि जो आपने सोचा है वो एकदम से हो जाए. बट ऑब्वियसली चीजें टाइम लेती हैं. I'll move on to the last question after this. ठीक है? Sure. Okay, so for my last question, what I want to know is any advice from your side for the young entrepreneurs watching us who want to set up a business in your industry or in any industry. The best advice I could give is कि do not
look or do not try to follow someone else. You Right. have your own story. You have your own impact. You can make a difference your own self. You do not need anyone, because I believe in something which is hard to believe, but I believe in that. And that is that when you are born alone, if you are born alone, or when you're born alone, you can, and you're gonna die alone. ये भी सबको पता है. हम आते भी अकेले हैं, हम जाते भी अकेले हैं. तो कुछ अर्सा अकेले रह के भी देख लेते हैं, और उसके अंदर जो कुछ आप सीखते हो वो भी बहुत जरूरी होता है. बिल्कुल. जरूरी नहीं है आप हर टाइम यू सराउंड योरसेल्फ विद पीपल, विद फ्रेंड्स, विद वो वाली लाइफ एंड कॉल योरसेल्फ एंटी सोशल. ऐसा नहीं होता. यू वर्किंग ऑन योरसेल्फ, सो ट्राई टू वर्क ऑन योरसेल्फ. मतलब ये कुछ छोटे छोटे लेसन हैं जो हमारी हमारी लाइफ में नेचर हमें देता है, और हम उनसे इग्नोर करते हैं. मतलब जैसे मैंने आपसे पहले बात की, और मैं दोबारा उसको रिपीट करूंगा, कि जब अगर हम आते अकेले हैं, जाते अकेले हैं, तो कुछ अर्सा हमें अकेला गुजारना चाहिए उस टाइम को ही समझने के लिए कि हम अकेले क्यों आते हैं और हमने अकेले क्यों जाना है. तो उस टाइम के बीच में डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, एंड यू कैन डू एनीथिंग. मतलब you do not have to go somewhere else. And this message should be and is especially for the people living in Pakistan. And you can do anything, or do not ever मतलब किसी को डिग्रेड और इस तरह नहीं करो, स्पेशली योर ओन सेल्फ. बिकॉज इस जर्नी में दिस टाइप ऑफ जर्नी you start degrading your own self most of the time, because I've been through it, or that was normal as well. That is normal as well. And when abhi bhi sometimes I go through that phase. So it's now it's like mujhe samajh aa gayi hai कि it's like a part of The journey. this journey. So you cannot let it overcome you. Right. मतलब आपने उसको ओवरकम करना है, आपने उसको ओवरकम नहीं होने देना. और just fight back, whatever is holding you down, just fight back. There are mentors out there, there are people who are delivering motivational speeches, और इस तरह के कोर्सेज हो रहे हैं, इस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं. जाएं, देखें, सुने, but they are not the end. They are not even the end themselves. ठीक है, उन्होंने भी आपको उतना बता दिया जितना उन्होंने सीखा है. बिल्कुल. और अगर आपसे कोई 10 साल 20 साल 30 साल आगे है, तो ऑब्वियसली उसने आपको वो जल्दी बता दिया. सो टेक एडवांटेज ऑफ इट, लर्न फ्रॉम इट, रिस्पेक्ट दैट पर्सन, बट दैट इज नॉट द एंड. हमेशा ये आपने सोचना है कि जहाँ पे उस बंदे की स्पीच खत्म हुई है, आपने उससे आगे सोचना है. बिल्कुल सही. वो अगर आपको कह दे कि ये करना है, तो डू नॉट, मैं आपसे 10 साल 20 साल 30 साल बड़ा हूँ, तो आपने यही करना है. तो यू कैन नॉट जस्ट बी स्टक देयर कि मुझे एक 20 साल बड़े बंदे ने ये कह दिया, तो मैंने यहाँ तक ही करना. नहीं, उसका मैसेज सुनो ध्यान से. उसके पीछे उसका मैसेज क्या है, कि मैं आपको ये मैसेज दे रहा हूँ, एंड आई एम एल्डर देन यू, और यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, बट सोचना आपने आगे का है. तो बिकॉज वी आर ऑलरेडी एज अ नेशन, वी आर ऑलरेडी बिहाइंड, जो कि मतलब एक फेस करने वाली बात है. इसमें कोई वो नहीं है शर्मिंदा होने वाली, या वो इट्स ओके. इट्स पार्ट ऑफ, जिस तरह हर एक बंदे की लाइफ में कुछ पार्ट्स होते हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. मतलब ये एक अल्लाह की तरफ से या कुछ भी हो सकता है. सो वी आर नॉट विद द वर्ल्ड, वी आर स्टिल नॉट विद द वर्ल्ड. मतलब ट्रेवल कर लेना, लोगों से बातें कर लेना, कनेक्ट हो जाना, दैट इज समथिंग एल्स. बट एक आई एम टॉकिंग अबाउट अनदर लेवल, एक टेक्नोलॉजी वाइज, एक लोगों को समझने तक वाइज, वी आर बिहाइंड. मतलब हम लोगों से अच्छी तरह कनेक्ट भी नहीं हो सकता. सही. और ये भी 90% और 10% डिफरेंस है. मतलब 10% लोग शायद कनेक्ट हो सकते हो यहाँ पे, बट 90% पीपल कैन नॉट. तो हमें 90% ऐसे होने चाहिए कि जो कनेक्ट हो सकें बाहर दुनिया के साथ. मतलब वी डोंट, हम एलियंस नहीं लगने चाहिए उन्हें, जो कि हम लगते हैं. और बजाय इसके कि हम किसी को ब्लेम करें कि ये उसकी वजह से, ये उसकी वजह से, ये उसकी वजह से, लेट्स जस्ट डू व्हाट वी कैन ऑन आवर ओन सेल्व्स एंड जस्ट मेक द डिफरेंस. और अगर हो गया तो ठीक है. मतलब
आज नहीं तो कल वाली जनरेशन विल रीप समथिंग आउट ऑफ इट. बट अगर ना हुआ तब भी ठीक है, एटलीस्ट यू ट्राइड. सो यू कैन नॉट जस्ट गिव अप. इफ यू सी अ होल, इफ यू सी अ विंडो, so you should jump out of it. You should try to fill that gap and build. मतलब एक कहते हैं ना कि अगर आपको होल नजर आ रहा है तो just put a brick there so you can build something up. So Right. वो आप एक ब्रेक ही रख दोगे तो that could be enough. जो हमारी सिचुएशन है, if you're thinking about Pakistan. So बाकी सब अल्लाह के हाथ में. बिल्कुल ठीक है. Wonderful advice. Thank you so much for telling us about your business Okay. journey. Good luck for the future. And to Thank all you. watching, thank you so much for watching, everyone. If you want to sign up for Founder Stories, आप startupinsider.info पे जाके कर सकते हैं. Till next time, take care and Allah Hafiz.